हैं और आपको एक बहुत ही खास बातचीत करवाते हैं। मिस्टर आर मुकुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी एंड सीईओ टाटा केमिकल्स। जी हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है बाजार के लिए, लेकिन ऐसे समय में हम आपको इंडस्ट्री लीडर्स और सबसे एडमायर्ड कंपनीज अपने अपने सेक्टर की कौन सी हैं वो लेके आ रहे हैं उनसे बातचीत के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्क्रीन की वीकनेस, फाइनेंशियल मार्केट की वीकनेस एक बात होती है, लेकिन देश में कंपनीज हैं एक से एक जो बहुत शानदार काम ऑन ग्राउंड हो रहा है। तो ये रियल इकोनॉमी इतनी टफ नहीं है, इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत शानदार कर रहे हैं, वो ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स का अपनी अलग चाल होती है। तो ये चर्चा हम आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ मुकुंदन जी हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। मैं अभी देख रहा था, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाल रहा था, तो मैंने देखा कि FY21 के चौथे क्वार्टर से लेके अब तक जो भी लास्ट क्वार्टर आया, आपने करीब करीब 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा मार्जिन बढ़ाया है। और अक्सर शायद एनालिस्ट क्वार्टरली मार्जिन देख देख के अपनी पिक्चर बनाते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर, मल्टी क्वार्टर ट्रेंड नहीं देखते, जो आपका क्लियरली एक्सपेंशन का नज़र आ रहा है। अगर हम चर्चा वहाँ से स्टार्ट करें कि कौन से ऐसे आप स्टेप्स ले रहे हैं जो ओवर द क्वार्टर्स आपके मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक तो बेसिक चीज ये है कि मार्केट जो है विच इज रियल मार्केट, विच मींस यू स्पीक टू आवर कस्टमर सेगमेंट्स, देयर इज कंटिन्यूड ग्रोथ इन देम, एंड आई थिंक उसी के वजह से जो है कि द डिमांड हैज बीन गुड पोस्ट कोविड रीओपनिंग, द बाउंस बैक वाज वेरी स्ट्रांग and it continues to be strong. Now with China reopening, I think it is going to accelerate even more. एंड उसके आगे जो है दो तीन सेक्टर जो जहाँ पे न्यू एप्लीकेशंस हुए हैं इस केमिकल्स के बारे में, दैट इज इन द सोलर पीवी ग्लास एज वेल एज इन द lithium carbonate. I think those sectors are growing at in excess of 6%. So one is the revenue growth that has to continue to grow. Second is we have tried to manage our costs, both the variable costs, fixed costs, very closely. There was a spike in between, जरूर इसमें increase हुआ था cost में, from mainly from energy. But even in Europe, where we have operations where energy costs did move up, I think the team did a good job in terms of managing the risk, hedging the energy prices so that our margins were protected. And in fact, because of efficiency, margins have increased. Okay. All right. बिल्कुल मिस्टर मुकुंदन, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में आपके इंटरनेशनल बिजनेस तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंडियन बिजनेसेस सबड्यूड रहे हैं क्योंकि हायर इंपोर्ट कॉस्ट आपको रही है चाइना से। अभी फिलहाल आगे के क्वार्टर्स के लिए क्या डायरेक्शन दे सकते हैं आप हमें? No, I don't think imports are that high. In fact, imports are far lower than before, what we used to see 2-3 years ago. So the real issue is China also has become a net importer. In fact, the inventory levels in China are today at the all-time low. So really the material coming in the market from that place is going to be a bit of a challenge. The issue for the industry has been that there have been pockets where customers had done a higher level of inventory holding and stocking, and they were simply destocking because supply chain issues जो हैं वो more or less have been cleared. So we do believe that going forward, even Indian market will continue to show steady growth. In fact, we are adding 200,000 ton capacity in the next year in India, which will come on stream by mid of next year. So we do believe that Indian quantities will go up by 100,000 ton, and these are fully booked. So Indian market is on a good wicket, and India continues to be a bright spot. US continues to be a bright spot for us. Africa is now debt free. Our Kenyan operations are debt free, and surprise to us has been the UK operations, which has also become positive after 3-4 years of let's say difficult performance. I think that they're also returned good profit. मिस्टर मुकुंदन, Q1 FY23 के मुकाबले अगर हम देखें Q3 FY23 तक आते थे, मार्जिन्स में हमने एक डाउन ट्रेंड देखा है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या मार्जिन से इम्प्रूवमेंट साइंस नजर आएंगे? और ओवरऑल कैपेक्स की आपने बात की, लेकिन मीठापुर फैसिलिटी की कैपेक्स प्लान्स किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, डेट लेवल्स किस तरह से इस वक्त नजर आ रहे हैं, इस पर अगर आप कोई लाइट डालना चाहें।
Yeah, I think if you really look at the margin trends, usually they in this business they do start strong and the Q1, and then do tend to move, and then by Q4 again they tend to move back to where the Q1 number is. So the reason for that, uska the main reason यही है कि our contracting is almost annual contracting, and what happens by Q4 of every year, which is Q1 of the calendar year, usually the contracts get reset upward, and depending on the let's say the cost and other issues. So we do believe that this trend will continue. As far as the expansion plan is concerned, the first phase of expansion plan, which was about 2,600 crores of investment we had planned in Mithapur, that will be more or less fully commissioned by mid of the coming budget year. And the salt capacity will go up by about 200,000 ton, and also soda ash capacity will go up by 200,000 ton. And half of that quantity will come into the marketplace, because it's available only for half of the year. All right. ओके बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए मिस्टर मुकुंदन, और टाटा केमिकल्स के आगे के फर्दर रोड मैप पे भी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, तो ये तो टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट थे।